how do I see the scenario of media channels in Arunachal Pradesh? I think for the past few years, the media in Arunachal has been growing. Um, we, like so many things in the past, with not just the media but also with generally just regards to anything in Arunachal, we have had to make massive changes over a very short period of time, from the time of India's independence to the NEFA days, to the formation of the legislative councils, then suddenly moving to union territory status and statehood. We went from within a span of 2 to 3 generations not having any formal modern formal literacy and education to suddenly driving around in SUVs and mobile phones and laptops and computers in our hands. So I think we've had to make massive changes to our tribal lifestyles, our everyday lives, and I'm not sure if we have necessarily coped with it in the best possible way. But given the circumstances, I think we've done pretty well. Having said that, I will also say that that the landscape of the media in Arunachal has also grown quite exponentially in the last, I would say, in the last 6 years. Yeah, 6 years would be safe to say. There has been a massive growth in in the electronic media landscape in Arunachal Pradesh, and as is often said, there has been a mushrooming of news channels. Good or bad, that's not for me to decide. But of course, there are areas of improvement. There are areas where we can learn to learn to become better journalists, to organize and to operate better media houses, to remember why we got into the field, to remember that our ethics take primacy. It's a media tag, a journalist tag is not a free pass for it's not an all access it's not an all access pass to anything and anywhere. It is not a pass to bypass the law. It's not a ticket to act above the law. I think that's something we must remember. And it's ironic, and I would like to apologize to Arunachal Mirror, which has given me the chance and the opportunity as the General Secretary of the Arunachal Pradesh Union of Working Journalists to speak on the matter and ask me these questions, when I think I am being a little extra critical of electronic media in the state. I think a lot of our journalists and a lot of our media organizations have been misusing the power of the camera and the microphone. This has happened recently over the last 3 years, especially during the pandemic. We've always seen traces of it happen in the past as well. Even with the print media journalists, I will not absolve myself of that responsibility. But even within the press media fraternity, this has happened in the past. I think it does kind of happen. There are certain instances where it still happens, and I think it's unfortunately happening more, amongst certain media houses, amongst journalists from certain media houses, and among certain platforms, because social media has, democratized news. It has democratized media. So it's not just people who can, speak eloquently or presentable Hindi or English or any other language that that can bring the news to the people. I think it has, which is a positive. I think it has helped make news more accessible, news gathering more accessible. But at the same time, I think people also need to decide. News consumers need to decide what kind of news they want to consume. If you're a reader, if you're a viewer,
I think you need to. I think we need to. Not you. I would say. I think we need to decide as to what is the kind of news that we are willing to subscribe to. What are the kind of what kind of journalism is it that we would like to see on our television sets, on our mobile phones, the kind of news that we would like to read. If whether now you ask if I would like if that responsibility lies with the audiences or with with journalists, I think it lies that responsibility. I think lies with both parties. I think we as journalists need to ensure that we keep giving good content, responsible content, ethical content, news that is not biased, news that is not one-sided, news that is well-rounded. I often say that news, in while presenting the news, that it's often said that we need to present both sides of the story, but I think an actual news story has only one shape, and that's a circular shape, which means there is no one side. It's all it's a complete picture. It's a complete circular picture that we need to present to our viewers, to our readers. It's our responsibility, and our consumers, our readers, उनको भी समझना चाहिए कि जस्ट बिकॉज एक समय पे कोई आपका मुद्दा उठा रहा है तो उसको जय जयकार करोगे और दूसरों को गाली दोगे. आई थिंक दैट्स नॉट करेक्ट. आपको भी समझना है कि एक पत्रकार, एक जर्नलिस्ट का काम आपका इशू को, आपके ही मुद्दों को ही सिर्फ ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के प्रेजेंट करना नहीं है. एक जर्नलिस्ट का काम ये है कि he or she tells a complete picture, presents the entire picture of what has happened, why it has happened, how it happened, when it happened, where it happened. These are the important tenets that journalists have to present, and I think the blame lies with both us as journalists and us as audiences and as viewers as well. I think that's where we need to take a shared responsibility and a shared blame for the state of affairs that it has degraded to currently, that I can see, unfortunately. Now, as the General Secretary of the Union of Working Journalists, I have to unequivocally side and support our members, those journalists who are affiliated with us, and even those journalists who are actually not even affiliated with us. As a journalist myself, how can I possibly go to bed at night when I know that a fellow colleague, a fellow journalist has been assaulted, has been trolled online. Now, trolling is a big issue these days. I cannot possibly have a good night's sleep if I think that if I do not act in a manner that is responsible to the position, responsible for the position that I have been given. I think it's important that as journalists and even as citizens, even as private citizens, we condemn violence, whether it's physical, it's mental, emotional, verbal, any kind of violence towards journalists who are trying to do good work. It should always be condemned, not just by journalist bodies, not just by the state government or the police, but even by all citizens. I think it's basic, decent human behavior to be sympathetic to the right cause, to somebody who has been wronged. I think that's my position, not just as an APUJ, not just as a union general secretary, but also as a citizen, as a common citizen. The message that I would like to give to our colleagues and to the public, that it's simply that we need to be careful about the kind of content we want to consume, the kind of content that we want. We should always look for news that is wholesome, as in it tells the entire story,
news that is clear, news that gives you all sides, gives you the entire picture, the truthful picture, gives you context of why something happened, and not just what happened. If a fire breaks out, it is the responsibility of a journalist to find out why that fire broke out. It's to give you a simple analogy. I think we cannot just blame our audiences alone. A simple analogy for our state: a couple of years back, we had a handful of restaurants in Itanagar and Nahanagar, and all they ever sold was momo and chow and thuppa, and everyone thought, oh, यहाँ और कुछ चलेगा नहीं, maybe fried rice. Then somebody else opened a different store, different restaurant. Then somebody else opened a different restaurant. And as these different restaurants offering different kind of foods, from pizzas to pastas, people started experimenting. People started becoming open to the idea of eating something else other than what was on offer for so many decades. It's the same with news. I think if we offer news that is high in quality, high in content, I think the audiences will also appreciate it over time. Unfortunately, I think we don't have much time. I think audiences need to learn to appreciate good news, and I don't mean happy news. I mean news content that is good. Audiences need to learn to appreciate good content quickly. They need to become vocal. A lot of people who criticize the media, these include our friends, our relatives, who criticize the media. They are never appreciative of the media. They only make, they only come to us and say, oh, this has happened. See, this is what your media is doing. I'm not saying you should clap when a bird flies. That's what it's supposed to do. But I think if you are going to be critical of the media, of certain media houses, of certain journalists, I think you need to also be appreciative of the good stuff, of the good content that's coming out. I think that is the appeal that I would like to make to the public. Hello, this is me Sapna Taim Taku from Arunachal News 24/7 and thank you Arunachal Mirror. आप लोगों ने आज ये समय दिया एक सीरियस डिस्कशन के ऊपर में, जितना भी मशरूमिंग ऑफ चैनल्स है, जैसे हम लोग अरुणाचल में जो सिनेरियो है अभी न्यूज़ चैनल्स, मीडिया हाउस, डिजिटल हाउस जितना भी है उसका चर्चा में है. एवरीवन इज़ लाइक सो इंटरेस्टेड टू टॉक अबाउट मीडिया एंड डिजिटल मीडिया एंड जितना मीडिया हाउसेस जो अभी आया है. तो मेरा ख्याल से एज अ सीनियर हम जो देखता है कि ये जो डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म को बोलने से अरुणाचल न्यूज़ 24/7 ने हम लोगों ने ही स्टार्ट किया था डिजिटल मीडिया, जो फेसबुक में हम लोग अभी जो जर्नलिज्म कर रहा है. तो एक इसका प्लस पॉइंट ये था कि हम लोग फेसबुक में इसलिए कर रहा था क्योंकि फेसबुक आजकल ऐसा होता है कि लोग टीवी नहीं देखते हैं, टीवी चैनल्स वगैरह को देखने का समय नहीं होता है. मोबाइल जो होता है एक पोर्टेबल होता है जिसमें आप मोबाइल में आप देख सकते हैं चैनल्स, जितना जो भी न्यूज़ चल रहा है, जो भी अपडेट्स है. तो हम लोग ऐसा करके चैनल्स जितना भी था हम लोगों ने ट्राई किया था कि फेसबुक में हम लोग का न्यूज़ को देने के लिए और सब जितना भी व्यूअर्स है वो देखे. फिर बाद में धीरे धीरे देखा है तो क्योंकि हम लोग का जो चैनल था हम लोगों ने लोगों को भी ये अवेयर कराया था और हम लोग अपना एक वेबसाइट भी बनाया. उसके बाद में यूट्यूब में भी हम लोगों ने चैनल खोला. तो फेसबुक भी एक मीडियम था हम लोग का न्यूज़ को फैलाने का. ये कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने एक चैनल स्टार्ट किया था अरुणाचल न्यूज़ 24/7 करके. इसका एडवांटेजेस भी बहुत था, लेकिन अभी हम लोग जब देख रहे हैं इतना सारा मीडिया हाउसेस निकल रहा है, डिसएडवांटेजेस भी है, अच्छा भी है और ख़राब भी है. हर चीज़ का तो टू साइड ऑफ द कॉइन्स होता ही है ना. जैसे हम लोग का अभी जो एफिलिएटेड बॉडी है प्रेस क्लब से, अरुणाचल प्रेस क्लब से, वो तो सिर्फ 9 चैनल्स ही है. तो जितना भी जो भी होगा, जैसा भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो जो हम लोग खुद देख के हम लोग एक प्रेस क्लब का, एक प्रेस बॉडी का अंदर में रह के इथिक्स को मेंटेन करके हम लोग न्यूज़ बनाते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट जितना भी बाहर में जो अभी जितना भी चैनल्स खुल रहा है, तो आप लोग एज अ व्यूअर आप लोग को मालूम चलना चाहिए कि ये किस तरह का न्यूज़ चैनल है, क्या ये रजिस्टर्ड चैनल है, क्या ये प्रॉपर ऑफिस मेंटेन करता है, क्या इसका पास प्रॉपर इक्विपमेंट्स गैजेट्स है ना नहीं है, इसका वेबसाइट है ना नहीं है, इसका यूट्यूब चैनल है ना नहीं है. सबसे पहले तो आप ये देखना है कि ये रजिस्टर्ड और लाइसेंस चैनल है कि नहीं है. क्योंकि कोई भी, जैसे आप लोग पब्लिक लोग खुद बोलते हैं कि कोई भी आजकल बूम लेके, उसके बाद लोगो लेके, एक मोबाइल लेके रास्ता में गली में स्ट्रीट में निकल जाता है अपना आपको जर्नलिस्ट है बोल के. तो पब्लिक को, व्यूवर्स को हम ये बताना चाहिए कि आप लोग ही देखना चाहिए कि आप लोग पूछना चाहिए कि ये रजिस्टर्ड चैनल है ना नहीं है. चलो हम भी इनकरेज करते हैं यूथ लोगों की आप लोग जर्नलिज्म
जर्नलिज्म को एज अ प्रोफेशन आप लोग लेके आप लोग आ रहा है ये फील्ड में, तो हम एडवाइस करते हैं कि आप लोग जो भी आ रहा है वो आप लोग अपना एक प्रॉपरली ये पूरा रजिस्ट्रेशन करके ऑफिस बना के उसके बाद आप लोग फील्ड में आइए। ऐसा नहीं है कि आप लोग बूम ले लिया उसके बाद मोबाइल लेके आप लोग स्ट्रीट में आ जाएगा एंड आप अपना आपको जर्नलिस्ट है बोलने लगेगा, ऐसा भी नहीं होना है ना। आप लोग अपना एक प्रॉपर रजिस्ट्रेशन करके ऑफिस वगैरह जैसे हम लोग सेटअप किया ऐसा करके आइए। तो व्यूवर्स को भी हम यही बताना चाहिए कि आप भी देखिए ना कि उसका क्रेडिबिलिटी कितना है, वो कैसा वाला जर्नलिस्ट है। जैसे इतना मशरूमिंग हो रहा है और ट्रोलिंग का अगर हम लोग बात करेगा, ट्रोलिंग तो होता ही है, हर जगह ट्रोलिंग होता है, पर ट्रोलिंग करने वाला ट्रोलर्स भी जानना चाहिए कि उस ट्रोलिंग से किसका मेंटल इफेक्ट पड़ेगा, किसी को डिस्टर्बेंस होगा या कोई डिप्रेशन में भी जा सकता है। आपका जो इतना ट्रोल करता है, आप घर में बैठ के आप आराम से ट्रोल करता है, लेकिन जिसका ऊपर बीत रहा है आप उसको समझिए, वो डिप्रेशन में चला जाएगा और वो उसको लगेगा कि ये चीज़ ठीक नहीं है, डिस्करेज हो जाएगा। यस, पॉजिटिव क्रिटिसिज्म इज़ ऑलवेज वेलकम। कोई पॉजिटिव क्रिटिसिज्म करता है तो हम लोग हमेशा वेलकम करते हैं कि चलो ठीक है, दिस इज़ द थिंग एंड दिस इज़ द थिंग। बट आप लोग जब ट्रोल करते हैं तो ट्रोल इज़ नॉट अ हेल्दी थिंग। आप लोग इतना ट्रोल करेगा तो कैसे मीडिया चैनल भी आगे बढ़ेगा। आप लोग ये भी जानना है, व्यूवर्स को तो हम यही बोलेगा कि इतना ट्रोलिंग्स नहीं करके पॉजिटिव क्रिटिसिज्म दीजिए ना, तो हम लोग भी एक्सेप्ट करेगा। आप लोग ट्रोलिंग करके आप लोग इतना ये करता है, आदमी को पूरा टेंशन डिप्रेशन में दे देता है, तो वो भी एक अच्छा चीज़ नहीं है। उसके बाद हम मेरा फेलो जर्नलिस्ट और मेरा जितना भी मीडिया कलीग्स को भी हम ये बोलना चाहेगा और जितना भी एस्पायरिंग जर्नलिस्ट है जो भी आ रहा है अभी फील्ड में, आप लोग सबको हम लोग वेलकम करते हैं। हम हमेशा एज अ सीनियर हम हमेशा अच्छा ही लगता है आप लोग का कंटेंट को देखे, आप लोग का काम, आपको इंथुसियाज्म को देखे, आई रियली अप्रिशिएट। बट आप लोग ये भी जानना है कि आप लोग का कंटेंट जो कैसा होना है, आप लोग किस तरह का कंटेंट बनाना है। अपना इंटरेस्ट, सेल्फ इंटरेस्ट में बना रहना, पब्लिक इंटरेस्ट में बना रहना, टाइम पास में बना रहे। आपका कंटेंट जो है, न्यूज़ जो है, आप लोग न्यूज़ को दिखाइए। आप लोग ट्रोल क्यों होते हैं? क्योंकि आप लोग अपना साइड ऑफ द स्टोरी दिखाते हैं। एज अ सीनियर हम यही बोलना चाहिएगा कि आप लोग अगर किसी का न्यूज़ बनाता है तो आप लोग बोथ साइड ऑफ द स्टोरी को दिखाने के लिए कोशिश करिए ना। आप लोग ऐसा मत करिए कि ये मेरा रिलेटिव है तो हम इसका साइड का स्टोरी दिखाएगा लेकिन दूसरा का नहीं दिखाएगा। जर्नलिज्म में सबसे बड़ा जो इथिक्स का बात करते हैं यही तो है। आप न्यूज़ है तो आप न्यूज़ को, सच्चाई को दिखाइए ना। आप क्या न्यूज़ है उसको दिखाइए। आप उसमें अपना इमोशनल अटैचमेंट, अपना पर्सनल अटैचमेंट को आप उसमें अपना व्यू पॉइंट को नहीं देना है। आप बोथ साइड ऑफ द स्टोरी दिखाइए, इसका भी दिखाइए, दूसरा का भी दिखाइए, दोनों का कंटेंट को आप दिखाइए ना। अगर आपको वो आदमी पसंद नहीं भी हो रहा होने से भी आप जो बोथ साइड ऑफ द स्टोरी को दिखाने से वही आपको कोई भी आदमी ट्रोल भी नहीं करेगा और आपका कंटेंट भी क्लियर होगा। हम तो यही बोलेगा कि अपना न्यूज़ कंटेंट को हमेशा सच को दिखाने के लिए कोशिश करिए। एज अ फोर्थ पिलर ऑफ द सोसाइटी आप लोग सच को दिखाइए, अपना कंटेंट को हमेशा क्लियर रखिए, अपना आप को क्लियर रखिए। इमोशनल फीलिंग्स के साथ में आप लोग कभी भी जर्नलिज्म नहीं कर पाए। और हम लोग का फेलो जर्नलिस्ट से भी हम यही बोलना चाहेगा, जितना भी मीडिया फ्रेटर्निटी है, जितना भी बडिंग मीडिया हाउसेस है और जितना भी एस्पायरिंग जर्नलिस्ट है जो आता है, आप लोग न्यूज़ को, सच्चाई को दिखाने के लिए कोशिश करिए। आप लोग न्यूज़ क्या है उसको दिखाने के लिए कोशिश करिए। ऐसा नहीं कि इमोशंस में आके अपना फीलिंग्स को या अपना आउटपुट डाल के नहीं करके आप लोग जितना हो सके सच्चाई को दिखाइए ना। उसके बाद बोथ साइड ऑफ द स्टोरी को दिखाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप ऐसा नहीं कि एक का साइड दिखा दे, एक का साइड नहीं दिखाया, ऐसा कभी भी नहीं करना है। आप दोनों साइड को दिखाना है, ये क्या बोल रहा है और ये क्या बोल रहा है, इससे क्या हो रहा है, उससे क्या हो रहा है, दोनों साइड ऑफ द स्टोरी को आप दिखाएगा तब जाके आपका क्या होता है कि आपका न्यूज़ जो कंप्लीट होता है। वन साइड ऑफ द स्टोरी दिखा के तो हम लोग को इतना ट्रोल करते हैं आजकल। तो हम इसलिए मेरा फेलो जितना भी एस्पायरिंग, जितना भी जर्नलिस्ट अभी आ रहा है नया, उसको भी हम रिक्वेस्ट करेगा कि आप लोग जब न्यूज़ बनाते हैं तो सच्चाई को दिखाइए और बोथ साइड ऑफ द स्टोरी को दिखाने के लिए कोशिश करिए। मेरा तो यही सजेशन रहेगा। और जितना भी नया जो न्यूज़ चैनल खोलने के लिए आप लोग सोचते हैं, हम तो सोचते हैं कि स्टेट में और भी न्यूज़ चैनल आओ, अच्छा न्यूज़ चैनल आओ, ताकि हम लोग अच्छा से मिलके काम कर सकेगा। तो आप लोग वही है कि प्रॉपर रजिस्ट्रेशन, प्रॉपर लाइसेंस, प्रॉपर ऑफिस, प्रॉपर इक्विपमेंट्स का साथ में आइएगा। थैंक यू।